think of it as a sign. Do not let people step over you in the name of love, in the name of friendship. I have met some monsters. I have learned the biggest lesson of my life. Basically, hate people, hate who are not considerate. Your life, live it, please. Hi guys, welcome back to my channel, and yeah, there's nothing else I want to say. New Year's, wow! Finally ये साल खत्म होने वाला है. This is probably my last video for this year, and I have a lot to say. A lot. Like this is going to be a sit-down talking video, and I really wanted to do one since a very long time. So I was like, why not? So let's talk about this whole year. What went down, what I learned, what I'm not gonna bring into 2026, what I am going to bring in 2026, and yeah. Hi guys, me time with Laju. Wait, come. What happened this year? See, I think this is probably going to be one of the most realest videos I have ever shot. This is probably going to be something that I don't speak about much. अपने दोस्तों से भी तो publicly तो is like a very big thing. This was the worst year of my life. Worst year of my life. I lost a few people who were closer to me than anything else in the world. I lost my best friend. I lost a very, very close friend who was like a sister to me. But okay, जो भी हुआ, I did not work out. Plus, तो मैं ऐसे तो नहीं बात कर सकती ना यार. So that happened, and I was with someone, I lost that person, and stuff like that. I lost my company, and I basically lost parts of me which I was never prepared to lose. Did I take it well? I don't know, because मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है. मैं ना चीज़ें कैसे बताऊँ, अब मैं शायद एक्सेप्ट नहीं करती, या मैं इतना अपने आप को बिजी रख लेती हूँ कि मैं फील ही ना करूँ और मैं नम हो जाऊँ, विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी बैड थिंग. यू शुड ऑलवेज फील योर इमोशंस, एंड आई एम वेरी अपसेट कि मैं क्यों नहीं कर पाती. लड्डू के होते आज ऐसे ना वीडियो नहीं बन पाएगी. दोनों ही नहीं है ना अब हम, तो मैं नहीं कर पाती. बट आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट कि तुम लोग करो. नाउ द थिंग इज, एवरीथिंग हैपेंड वेरी क्विकली, स्पेशली मेरे दोस्तों के केस में. चली जा रहा है कुछ ना, मतलब कुछ ऐसा जब होता है ना, तो कुछ ऐसा होता है ना कि चली जा रहा है, एंड देन थिंग्स फॉल अपार्ट. यू काइंड ऑफ सी इट कमिंग. बट जैसे कुछ दोस्तियों में मेरे साथ ऐसा था कि मैं कहीं ना कहीं चाहती ही थी वो दोस्ती खत्म हो जाए, और मुझे बस वो लास्ट स्ट्रॉ मिल गया कि चलो अच्छा है खत्म हो गई. एंड मैंने कभी मुड़ के ऐसे सैड भी नहीं हुई थी कि क्यों खत्म हो गई है क्या. बट देयर वर अ सर्टन पीपल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनका मुझे बहुत बुरा लगा. एंड जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि मेरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज मेरा बहुत क्लोज बॉन्ड था. एंड आई डोंट नो कि मैं कितना बोल सकती हूँ कितना नहीं. बट वॉट आई एम गोना से इज आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट, एंड आई थिंक अ पार्ट ऑफ मी विल ऑलवेज होल्ड ऑन टू दैट हर्ट. बिकॉज तुम्हारे साथ लाइफ में ना जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुत बार होता है कि तुम मूव ऑन कर जाते हो, यूजली कर जाते हो. बट ये चीज़ मेरे लिए ऐसी थी कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी. तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब मैं नहीं माफ़ करूँगी. मैं यूजली माफ़ कर देती हूँ, बट कई जगह मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना कि मैं अब बोलती हूँ मुँह पे कि मैं नहीं माफ़ कर सकती कभी भी. कभी कभी भी लाइफ में अगर बात होती है या कुछ ऐसा है. बट जो भी है वो सब छोड़ो. What else that I learned was, it is very very important to know कि तुम्हारे आसपास तुमने कैसे लोग रखे हुए हैं. एंड मुझे नहीं पता कि आउट ऑफ लोनलीनेस मेरे आसपास कुछ स्पेसिफिक लोग हैं थे, आई मीन, या
मेरे को एक्चुअली उनसे कुछ था अंदर से, लाइक दे मेंट समथिंग टू मी और नॉट, आई डोंट नो, बट इफ दैट इज यू and if there is a voice inside you, your gut telling you ki, you know, this person is not supposed to be in your life, please listen to that voice as soon as you can, because things get very very bad and you will regret it. And I would never wish that on anybody कि कोई, तुम अपनी गट को निग्लेक्ट जितना करते हो ना, इट कम्स बैक टू यू, लाइक गॉड मेक्स श्योर कि तूने नहीं सुनी ना, अब तू 10 गुना उसका सहेगी और फिर ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ख़त्म होना वो लिखा है, यू नो इट इन योर हार्ट, बट भगवान भी पूरा तुम्हें लेसन दे के जाएगा. सो दैट हैपेंड एंड there were a lot of scenarios in my life this year that I lost my self respect, I lost my sanity, I lost all my confidence, and that is why it was such a bad year. I did not have the strength to wake up and work, to find a path for my career, to think I was, you know, open to new friendships, or even I distanced myself from a lot of my existing friends who have been nothing but so good to me all this while, like always, like ever. So these are some things that I did very very bad, and I am making sure कि अब कभी भी लाइफ में मैं इससे ज़्यादा अपने आप को नीचे ना रखूं. आई हैव मेड श्योर कि अब मेरे लिए मैं ही सबसे ऊपर आऊँ. मेरे को नहीं रख, मतलब रखो दोस्तियाँ करो, नेवर लूज योर हार्ट, बट चूज योर सेल्फ, चूज योर वर्थ. तुम्हारी वर्थ ना अपने हाथ में होती है. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का डंडा पकड़ लो कि नहीं बस हो गया. एंड मेरे साथ ही सामने वाला नहीं कर सकता. मेरे साथ क्या होता है, मेरे से तुम किस, मतलब मेरे को बाहर किसी से मिलोगे ना, so there was a time when people were genuinely scared of me because I don't tolerate bullshit at all. ये मेरा mic है. I don't tolerate bullshit at all, but मैंने जितनी चीज़ें सह ली ना, मैं खुद बोलती हूँ अब कि मेरे को सही consequences मिले हैं क्योंकि मैंने खुद neglect करी है वो चीज़ें, which is like a very big lesson for me now. So one thing that I'm taking to 2026 is my all the self-respect that I lost back with myself, and I'm stepping into the new year with that. I am not taking anybody's bullshit. No matter you're my best friend, you're not my best friend if you're giving me bullshit. You're not my best friend if you're not respecting me. You do not have one single emotion for me if you're not respecting me, if you are not considerate. I am the most considerate person that I know, and I basically hate who are not considerate. मतलब तुम्हारे दिमाग में मैं कैसे नहीं आ सकती हूँ. And I have met some monsters this year. I have dealt with some monster like people who I have literally been on calls crying, having a full blown panic attack, and I know how serious a panic attack is. And the person on the call was literally satisfied, and I do not want to get into the depth of that at all. But I have learned the biggest lesson of my life, that choose yourself. If you know that what your worth is, stick to it. Make sure you know your worth and stick to it. Do not give anybody the power over you. It's just the worst thing you could do to yourself. This is your life, live it, please. Live it for yourself. Do not let people step over you in the name of love, in the name of friendship, in the name of family, anything. Matlab, just don't. And आई थिंक राइट नाउ मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग टू माई पास्ट सेल्फ. मेरा पास्ट मतलब कल जैसे मैं कल तक थी, या 1 मिनट पहले तक. मे बी sometime later I will look at this video and I would be so thankful that I was this strong जो अभी मैं बोल रही हूँ. Next thing that I'm going to take into 2026 is a heart full of hope.
because I love love and I have a lot of love to give, and I know for a fact that I am someone who deserves a lot of love. So I am going in with a heart full of hope that I will find the love of my life next year, and hopefully things work out well and I start a life full of love and heal from my traumas and give myself the love that I deserve. And I will not let anybody who does not know what it is, what a blessing it is to be loved or be taken care of by me. I will not let a person like that enter my life. And I want to go back to the person I was. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड थी कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, चाहे मेरे खिलाफ 100 लोग खड़े हों. So I want to be that person again. I want to work my ass off. I want to build an insane life for myself. And honestly, I know my caliber. I know my potential. Everybody around me keeps telling me, bro, you have so much talent. You have so much potential. Please stop wasting it. And I'm done. I'm honestly done wasting it. I'm not giving a single fuck about anything, or I'm not gonna let anything come in my way. For my goals next year, I also really wanna fix my health and lose weight and be healthy. I don't, my body is literally at its unhealthiest right now. I have a certain issues. I have PCOD, I have thyroid, borderline thyroid to be very honest. I have very bad gut issues. And I recently read कि जब तुम्हारा अनहील्ड ट्रॉमा होता है ना एंड तुम इतना सप्रेस करते हो चीज़ें, तुम अपने अंदर इतना भर लेते हो, इट रिएक्ट्स विद योर बॉडी and it reacts with your gut, especially when your gut is not happy, your mind cannot be happy. And likewise, when you're going through so much stress, that is why you stress eat, and that ruins your gut. All of these things are interlinked, and मैंने इतना सीख लिया है ना इस साल में कि I am not letting anything or anybody, मेरे को पता है मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ें, but please, please trust me. Like, if you are watching this video right now, just please think of it as a sign, think of it as something you needed to hear or what, but please do not let anything or anyone ruin your head, your heart, your body, your respect, anything. Just don't. एंड ये सिर्फ लोगों के केस में नहीं है भाई, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी योर इनसिक्योरिटीज, इट कुड बी योर ग्रेड, इट कुड बी योर जॉब, योर करियर, इट कुड बी लिटरली एनीथिंग. तो मैं तो बस एक जनरल बात बोल रही हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू लर्न इट द वे आई लर्न इट. दैट्स इट. That's literally it. And the main thing that I'm hoping for next year is that we get a silver play button. I really want YouTube to skyrocket for me, and in general, social media, Instagram, and YouTube. You know, a silver play button has been it's been my wish for so many years. मैं कभी consistent नहीं हो पाई, बट मेरे को वो सिल्वर बटन ऐसे खींचता है ना, मतलब मैं वहाँ इसलिए देख रही हूँ बार बार, मेरा विजन बोर्ड पड़ा हुआ है वहाँ पे, एंड उस पर भी मुझे उस सिल्वर बटन पे मेरी नज़र जाई जा रही है. आई डिड नॉट वर्क स्ट्रॉन्ग इनफ दिस ईयर, आई डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ दिस ईयर कि मुझे वो मिल जाए, बट I will do that, and I have been consistent with YouTube. So I want to be way and way, 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 way more consistent and grab that button. मैं यहाँ बड़ा सा लगवा दूँ, मतलब जितना है उतना ही, बट वही लगाऊंगी. एंड मेरा ड्रीम है कि मेरी एक पूरी वॉल फिल्ड हो विद प्ले बटन्स, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, 2-3 सिल्वर्स हो, 2-3 गोल्ड हो. आई सॉ बहुत साल पहले किसी की स्टोरी में, तब से मैं दिमाग में कि शिट ब्रो, आई वांट दिस, वाओ. So, yeah, and I want to live a soft life. I do not want to be harsh on myself. I don't want to be harsh on anybody. I don't want my walls to always be so high that I do not let
anyone enters. Someone with pure intentions and heart enters my life, I am going to keep them. And if somebody has an ill intention, I will be the first person to kick them out. And yeah, the end goal is to be happy, be content with life, and be my best version. And so full of love, so full of love. I love love. I want love all around me, my friends, my family, my relationship, my life, my work, everything. I just want everything to be so full of love, and I am more than open to receive it, and I can't wait for it. And I will see you guys in the next year. Here's to more content, more fun, more love and laughter, loads of things. So I'll see you guys in the next vlog or in the next year. This is hard for you.